the so many holidays. Then we are starting today our next class of the laws of motion chapter going on. Then this one our last topic of this unit, that is a connected bodies in the motion. When we are connected two or more bodies with each other with help of the rope, that pulley, we are connecting with each other, then how we can apply their Newton's second law. Okay, then in last class we discussed beta any person is standing in a lift, then lift is accelerating up and down, then how much change in the weight of that person, कि कोई भी बॉडी अगर लिफ्ट के अंदर ऊपर नीचे एक्सेलरेट कर रही है या एक्सेलरेट नहीं कर रही है, एंड इफ ड्यूरिंग द फ्री फॉल केस तो बॉडी के वेट में कितना चेंज आता है, दैट वेट वी आर कॉलिंग इट एपरेंट वेट. तो बॉडी का एपरेंट वेट क्या हो जाएगा. Okay, so this one we discussed already by using their application of their Newton's second law. Second law को motion को use करते हुए F equal to ma इस law को use करते हुए हमने ये find किया था. अब हम connect कर रहे two bodies with help of the pulley. If we are connecting, then how you can find their acceleration and tension in that rope. Okay, so motion of the connected body, let we are taking their two masses, here mass m1 we are taking, another mass we are taking m2. These two masses we are connecting with the rope, and this one rope we are hanging with help of the pulley. Okay, this one our pulley, but frictionless pulley. We will not take friction of this one. Frictionless pulley we are taking. Then with help of this one we will find their acceleration, by which acceleration this bodies are accelerating, and what will be tension. Before this one I will tell about the tension. What is tension? Tension is the force which is acting between their molecules of the string. Okay, in this string having their force, that we will call it tension. Okay, here string is there. String you can say rope, कि रोप के अंदर अगर दो पार्टिकल्स आप कनेक्ट कर रहे हो तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है, आपस में एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं. ओके, व्हाट टेंशन, टेंशन. Okay, that T is a symbol and this one is a tension. Its unit will be beta Newton only, because ये क्या है, एक फोर्स ही है, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, टेंशन, न्यूटन ही होती है. तो टेंशन क्या होती है, दैट इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग इनसाइड द मॉलिक्यूल ऑफ द रोप. रोप के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, हम टेंशन बोलते हैं. और ये हमेशा कहाँ लगता है, कनेक्टेड पॉइंट की तरफ, कि जहां हमने रोप को कनेक्ट कर रखा है, यहाँ हमने रोप को कनेक्ट कर रखा है विद हेल्प ऑफ द पुली, तो उसकी तरफ हमेशा इसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी. सो डायरेक्शन इट विल बी टुवर्ड द कनेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि डायरेक्शन, बिकॉज फोर्स इज आवर वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन आल्सो. ओके, सो वन इज योर नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ये क्या होता है, आई टोल्ड यू दिस वन बेटा फोर्स ओनली. ये भी क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है दैट विल एक्ट नॉर्मली, जो नॉर्मली एक्ट होता है टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट. कि अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग हियर बेटा दिस वन योर नॉर्मल रिएक्शन, आई एम टेलिंग यू सम फोर्सेज. नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि अगर ये सरफेस पे हमने बॉडी रखी हुई है, तो इस बॉडी के ऊपर जो जहां पे कनेक्ट हो रखी है, दिस वन कनेक्टिंग पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लगता है, परपेंडिकुलर टुवर्ड द बॉडी, दैट फोर्स इज नोन एज योर नॉर्मल रिएक्शन. ओके, और एक फोर्स लगता है हमारा ड्यू टू मास. अगर बॉडी का हैविंग सम मास, देन वन विल बी एक्ट ड्यू टू वेट, दैट विल बी mg. ओके, नॉर्मल रिएक्शन आर हम डिनोट करते हैं, कहाँ लगता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट पॉइंट का, कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर. क्लियर. सेकेंड वन योर वेट. वेट भी क्या होता है, एक आपका फोर्स ही होता है, दैट विल बी योर mg ओनली. वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन.
इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, वर्टिकल डाउनवर्ड्स। कोई भी बॉडी है जिसका मास होगा तो उसका क्या रहेगा, वेट रहेगा, और वेट क्या आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, वर्टिकल डाउनवर्ड। कि अगर बॉडी ऐसे है, इफ वी आर टेकिंग प्लेन लाइक दिस वन, बॉडी वी आर कीपिंग ऑन इट, तो वेट हमेशा कहाँ लगेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड। इस तरीके से हमारा वेट क्या लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इन केस ऑफ द लिफ्ट ऑल्सो कि वेट हमेशा क्या लगेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड में लगेगा। इफ यू आर टेकिंग द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है कि अगर बॉडी कॉन्टैक्ट में रहेगी किसी सरफेस के साथ तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, अदरवाइज इट विल बी नॉट देयर। सो बॉडी इज कनेक्टिंग विद द सरफेस, सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी perpendicular to this contact, perpendicular this one, perpendicular to the contact point here R only. Okay, अगर इस ऑब्जेक्ट को क्या है, किसी रोप के साथ कनेक्ट कर देंगे, किसी रोप के साथ कनेक्ट कर देंगे, देन फॉर एग्जाम्पल दिस वन ईयर पुली वी आर कनेक्टिंग दिस वन रोप, तो यहाँ कनेक्ट है तो अनदर फोर्स भी लगेगा। जहाँ रोप होगी बेटा, स्ट्रिंग होगी, तो वहां एक फोर्स लगता है दैट वी विल कॉल इट टेंशन। अभी मैंने बताया टेंशन, व्हाट, टेंशन। ओके, टेंशन दैट इट सिंबल इज टी ओनली। तो ये भी फोर्स हमेशा क्या लगेगी, कनेक्टिंग पॉइंट की तरफ, इफ देयर विल बी स्ट्रिंग, सो टी विल बी सिंबल दिस वन। Okay, these are the different forces which we are using in this one chapter, that normal reaction, weight and your tension. Okay, now we will see our this one question beta here. Now these body we are not contact, ये mass क्या है, किसी भी surface के साथ contact में नहीं है, that's why here normal reaction will be not there. Normal reaction कब लगती है, जब body क्या होती है, किसी surface के साथ contact में होती है। तो यहाँ contact ही नहीं है body का, तो normal reaction नहीं रहेगी। This one body is connected with help of the rope, that's why here tension will be there. और tension कहाँ लगेगी, vertical upward direction, जिस तरफ हमने connect कर रखे हैं उसकी direction क्या रहेगी, T। और इसके अंदर भी T टेंशन कहाँ लगेगी, कनेक्टिंग पॉइंट T की तरफ। अगर आप एक ही स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, there is a two masses are there but one string is we have taken, that's why here tension only one will be there, not here T1 T2 3। okay, so after this one tension और भी कोई force लग रही है, I told you if mass will be there then one more force will be there, always weight। ओके, अगर मास होगा किसी बॉडी का तो उसका क्या लगेगा, फोर्स और लगता है, वेट। तो वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, वेट ऑल्सो विल बी एक्ट दैट इज हियर वर्टिकल डाउनवर्ड, द मास इज देयर, तो वेट कहाँ लगेगा इस बॉडी का, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना वेट लग रहा है इधर, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g, एंड ड्यू टू दिस वन मास हियर m2g। clear? So if body is accelerating, if your m2 is more than your m1, body is accelerating in this one direction, then we have to find out, then find tension and acceleration of these masses. Okay, so how we can find tension and acceleration of this one, this masses, this one system, you can say these two masses, you can say system, कंप्लीट सिस्टम है ये आपका, जिसके अंदर दो बॉडी क्या है, स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर रखी है, तो किस एक्सेलरेशन के साथ ये एक्सेलरेट करेगी, इफ इट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो हाउ वी कैन सोल्व दिस वन, नाउ वी विल अप्लाई बेटर देन बाय यूजिंग योर न्यूटन सेकंड लॉ। लेट वी आर टेकिंग, लेट two masses m1 and m2 connected with help of pulley, with help of the pulley we are connecting, and that pulley is your frictionless, because we are not taking friction of this pulley। क्लियर, फ्रिक्शन हम इंक्लूड नहीं कर रहे, फ्रिक्शन लेसली वी आर टेकिंग, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग देयर फ्रिक्शन लेस। सो फोर मास, जितने भी मास होते हैं बेटा उतनी ही न्यूटन्स इक्वेशन बनती, फोर्स इक्वेशन हम यूज करते हैं। नाउ फॉर फर्स्ट फॉर मास m1 वी आर टेकिंग, मास m1 के लिए हम यूज करेंगे दिस वन योर मास m1, दिस बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हियर वन फोर्स इज टेंशन, अनदर वन इज एक्टिंग योर m1g
two forces are acting there. So how we can write their equation? We know about their Newton second law. Then we can write their F equal to your ma. So here how many forces? Two forces. One is upward direction, second is downward direction, accelerating in upward direction. That's why this one will be more than this one force. So we can write there T minus your m1g equal to your m1a. Okay, this one will be our first equation by using our Newton second law. This one our equation first. Okay, now for the second mass we will take there, for the mass m2. m2 is this one. Okay, that mass is accelerating in downward. ये तो कहाँ जा रही थी? upward जा रहा था. ये कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है. Then accelerating downward direction. So again we will apply there Newton's second law only. Newton's second law. Then F equal to your ma. Okay, then accelerating downward means this one force will be more than this one force. So we can write there F2g minus your t. Okay, this one force is more than this one t na. So minus t equal to your m2a. This is our second equation by using your Newton second law. Okay, then by using these two equations, then we will solve our t and a. So how we can solve this one here? First we will write this one equation. Now equation first क्या आई थी अपनी? t minus your m1g equal to your m1a. Okay, equation second क्या निकली थी? equation second m2g minus your t m2a. Okay, these only na, m2g minus t m2a. Clear? Now how we can solve this one? Now for value of a and t, how we can find a and t value? Now if we are adding equation 1 and 2, adding equation 1 and 2, then we can write there t minus m1g equal to your m1a, m2g minus t equal to m2a. Add both equation, this one cancel with this one. Now here we can write there m2g minus your m1g equal to m1 plus your m2a. Okay, then from here we can take common g. After taking common g, then we can write there m2 minus m1 equal to m1 plus your m2, then a will be there. Okay, then write there a will be come out our a is equal to your g m1 minus m2, m1 divide by this one m1 plus m2. This is the equation of your a only. Okay, so acceleration by which that mass is coming down, m2 mass is coming down by this acceleration on our frictionless pulley. Okay, now we have to find out here second one, your tension. How we can find their tension? By using these equation. If we will divide beta these, then a to a cancel out. Okay, so we are dividing equation, divide equation 1 to second. So after dividing, then we can write there t1 minus your m1g equal to your m1a divide by m2g minus your t divide by your m2. We divide these both equation. So after this one we can write there a to a cancel out. Then here we can write there m2t minus m1g equal to your m1 m2g minus your t. Okay, a से a cancel हो गया, then cross multiply. After cross multiply we can write like this one.
Now solve this one. Here open this bracket, then we can write there m2t minus m1 m2g. Here we can write there m1 m2g minus here m1t. Clear? T we are finding here. So how we can find? This one take this side, this one we can bring this one side. Here m2t, this minus will be plus m1t equal to here m1 m2g. This one we will write this side, then here becomes m1 m2g only. Then after this one t we can take common from here, m1 plus m2 equal to, here we can write there 2m1 m2g. Then t this one this side we will write there remaining term, then t equal to 2m1 m2 by g, m1 plus m2. This is our tension which is acting in a motion when we are connecting two body with any string with help of the frictionless pulley. Okay, like this one way we can find their acceleration, and like this one way we can find their tension, and when we are connecting two objects. Okay, so next we are taking there any question which one will connected with our string. Let here we are taking frictionless pulley. This frictionless pulley we are connecting their two masses. Let here one mass we are taking here m1, whose mass we are taking there here m1 we are taking there 10 kg. Another mass we are taking here, that is m2, this one we are taking 5 kg. Clear? This body is accelerating downward direction with a acceleration. Then with help of this one find their tension and acceleration. How we can find it? So this one our frictionless pulley. Now find tension and acceleration in following figure. If m1 equal to 10 kg and m2 equal to your 5 kg respectively. So how we can find this one? How we can find? Again we will apply their Newton's second law for both masses. Here two mass will be there, then there compulsory there should be two Newton's equation. Okay, कम से कम अगर दो मास है तो दो फोर्स इक्वेशन होगी, तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा. So how we can write their force equation? For the first one m1 मास के लिए हम 4 इक्वेशन यूज करेंगे. So by Newton's second law, then how we can write this one? Then again your F equal to your MA. By using this one we can write there downward. One force will be act upward tension, another force due to weight will be act downward. So here we can write downward m1g. m1g, how much we can write there? m1 value is given your 10 only, and your g we are taking there. If not given 9.8, then round off you can take there 10 only. Okay, so write there m1g. Total force how much acting? This one minus this one. Okay, दो ही फोर्स लग रहे हो, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा. अगर दो फोर्स लग रहे तो then accelerating in upward downward direction. Downward accelerate करी means this one will be more than this one. So this one minus this one. So how we can write there m1g minus t equal to your m1a. Clear? This one put their value. Our values of m1 is given 10 and g we are taking 10 only, minus t equal to m1 your 10a. Then solve it. Then here will be 100 minus t equal to your 10a. That is your first equation. Clear? Now same for the second mass we will take there. For mass m2 we will use. m2 के लिए हम यही अप्लाई करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन. Then here again your one will be tension upward direction, second due to weight will be vertical downward direction.
vertical downwards. M2 is given in your question 5 kg and G will be, we can take there 10 again. So how we can write there? F equal to MA, then here M2 G minus, here accelerating upward na beta, upward, that's why T will be more than your M2G. T will be more than your M2G. So equation, this force minus this force due to this one force accelerating upward direction, कि ऊपर जितना फोर्स लग रहा है नीचे जितना फोर्स लग रहा है टोटल हम निकालेंगे, जिसकी वजह से क्या वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही थी. सो कितना फोर्स निकलेगा? T minus M2G. Due to this one it is accelerating upward direction, so we can write there M2A. So T minus M2 we can write there 5 and G we can write there 10 only. So 5 into your A. T minus your 50 equal to your 5A, this one your second equation. Clear? Now two equation came out. By using two equation then we can solve their T. First we can add both equation, then T to T cancel out. Clear? दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे then T will be come out. Adding equation 1 and 2. Clear? Then here we can write there, add करेंगे then T to T निकलेगा. Then here will be your 100 minus 50 equal to your 10A 5A, then it will be your 15A. Then here 50 minus equal to your 15A, then A will be come out 50 by 50 meter per second. Always write SI unit. A will be there. A की वैल्यू बेटा इसको सोल्व करो, कितना आएगा आपका 50 by 15, then here will be 10 by 3 meter per second square. Now put value of A here in first equation या सेकंड इक्वेशन कहीं भी पुट कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा? A की वैल्यू आ जाएगी. तो कितना आ रहा है? 100 minus T equal to your 10A. प्रीवियस इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट वन इक्वेशन ना, 100 minus T 10A. A की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 by 3. A is equal to your 10 by 3 meter per second square. So put value of A. Put value of A in equation फर्स्ट में पुट कर लेंगे. नाउ 100 minus T equal to your 10 into 10 by 3. Now solve this one. 100 minus 100 by 3, then it will be equal to T only. Okay, solve this one. 300 minus 100, 200 by 3 only, then solve. Then T is our tension only, so it will become in your Newton. So T we can write there 200 by 3 Newton. Like this one we can find their acceleration and tension. We have done one example related to our connected motion when we are taking two bodies connected with our string. Okay, so thank you for watching today our video. In next class we will discuss some problem related to our laws of motion.